नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर यह है कि करनूल के ख़दीम बस स्टैंड में वाक़ बावर्ची होटल में करनूल मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन की जानिब से रोज़दार SRA एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती की तायद में एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया। इस मौके पर रोज़दार SAR एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर्मरली डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और आथर RR लॉ सीरीज़, रोज़दार सीरीज़, रिसोर्स पर्सन फॉर UNODC AHT इशूज़ एंड वेरियस स्टेट पुलिस एंड लॉ एकेडमिक्स की तायद में वोट देने का मुतालबा किया। इस मौके पर प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना अब्दुल क़दीर शुएबी ने अंजाम दी। विजयवाड़ा से मेहमान खुसूसी का मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन के रियासती सदर मतीन साहब और दीगर अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में शरीक रहे। तमाम एडवोकेट्स को ये अपील की गई कि रोज़दार SAR के हक़ में पहला प्रेफरेंशियल वोट देकर उन्हें कामयाब करें। इस मौके पर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स ने बताया कि मुस्लिम एडवोकेट्स में अगर कोई काबिल है तो रोज़दार SR ये एडवोकेट हैं जिन्होंने लॉ के साइड यानी लॉ फील्ड में बहुत बड़े काम अंजाम दिए हैं जिसके कोई सानी नहीं है। इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने पूरे रियासत के एडवोकेट से अपील की है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस वोट रोज़दार साहब को दें या कम अज़ कम सेकंड प्रेफरेंशियल वोट रोज़दार साहब को देने की अपील की गई। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट खालिद सर PP और इसी तरीके से अकरम सर और इसाक़ सर, मोहम्मद रफ़ी, शेख यूनुस, खालिद सर, J रसूल ख़ान और भी दीगर दौलत, इसी तरीके से जोशी सर और ज़ुबैर सर, शुहाबुद्दीन सर और लेडी रिप्रेजेंटेटिव्स और दीगर भी शरीक रहे। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। हमारे सर का नाम अगर जनरल हॉस्पिटल में भी सर्च करें तो आगे बहुत सारे सर्विस पुलिस एकेडमी में डिपार्टमेंट में भी काम रहा था। सारे फोन कर कर कहीं काम करवाते रहते हैं। तो मैं एडवोकेट अर्शिया फरीद साहबा से कहता हूँ कि लोग ये व्यक्ति ये प्रेफरेंस होगा చూడండి प्लीज। रिलीजियस मैटर्स रहो, लीगल मैटर्स रहो, क्या तो कलेक्टर सी SPC काम रहो, ये फाइल ऐसे आगे हमारा सपोर्ट करते हैं। अब हमारे मेन मेहमान रोज़दार साहब मुझे 1985 से मालूम। मैं रोज़दार साहब 21 कॉलेज में पढ़े नेल्लूर में। पढ़ने के बाद अल्लाह के फजल से ऐसा फजल हुआ मैं भी APP जैसे सेलेक्ट हूँ। 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने भी 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद APP जैसे सेलेक्ट हुए। From the day of college until now, we are maintaining same friendship. I know every inch of his character. अब क्या है बोले तो एडवोकेट बोले तो खाली बरसुबानी मुंह से बात कर दो केस जीते। इनका एक्सपीरियंस है, ज्यादा बात करते नहीं, ज्यादा आर्गुमेंट करते नहीं। आंसर टू द पॉइंट, उनका आंसर टू द पॉइंट है। जजेस को इतना अच्छा लगता। अब हमें क्या करते हैं 10% मालूम होता ना केस के बारे में, 90% हमारा
ओवरसीज था, लेकिन रोजगार साहब आंसर टू द पॉइंट, वैसा उन्होंने दिल जीत लिए, जजेस का दिल जीत लिए, पुलिस का दिल जीत लिए और क्लाइंट्स का दिल जीत लिए। लेकिन मैं एक ही कमी का है, मतलब कम बात करते हैं। अब एक सेइंग है, आप लोगों को मालूम होता, नाइस ज्यादा करने वाले एम्प्टी मिरर्स मेक मच नाइस। Collaboration is Syed Razi Ahmad Rozdar. Rozdar is my family title. My name is Razi Ahmad Syed, but popularly known as Rozdar. I am very happy to great grand of last Udaygiri Nawab. And we settled at Kavali as bus operators since 1921 to 82 till nationalization, and the crews were taken over by the government in the year 1982, and we have given 332 workers to the APS office. Then we all came up with 7 brothers, and the 5th one, and myself and my brother joined in law college and completed the law, and immediately joined in the office of Y. Janakramaya, Yaragulpa Janakramaya at Kavali, a very busy office in civil side. Thereafter I developed my own criminal practice, because my senior was totally a civil side advocate, and I started imparting law to the students of my juniors immediately since the time of my final year course. During final year, I used to have interaction over all the subjects with my classmates and used to encourage the juniors. Thereafter, slowly, I started RR Law Services, and the notes that I dictated in the college in a simple way, that was slowly came out as a publication as RR Law Series, and in that way, the God has given opportunity to me to impart law to 6,472 students, among which now many of my beloved students are High Court judges, registrars, district judges, and magistrates, and APPs in Andhra, Telangana, since 2005 onwards. All the batches were trained in some manner, either by sensitization courses, or by workshops, or by induction training. Telangana and Andhra, and also Karnataka, Kerala, Orissa, Tamil Nadu. All the PPs were trained in the AP Police Academy, so as to learn the anti-human trafficking issues, how to deal and how to present those cases, so as to curb such trafficking activities. The witness is my joint director, Dan. He knows very well that how I was made to serve the officers, the police, prosecutors, judges, NGOs, and in the year 2006, over telephonic interviews, Dr. P.M. Nair, he was the additional DGP, and he served some time as a PA to our beloved
Abul Kalam Azad. For interview, he selected me as a resource person for anti-human trafficking issues. I was trained in the NUJS, National University Juridical Sciences, Kolkata. Then immediately I have designed the syllabus at that time. Bhaskar sir was the director from Anantapur. I have given a model syllabus to sensitize the advocates and PPs, judges and PPs for sensitization program, 1 day workshop, 2 days workshop, 3 days workshops, and I started my journey to visit various universities, that is including all the judicial academies in the south side, Kerala Police Academy, Tamil Nadu Police Academy, AP Police Academy, Telangana Police Academy, Orissa Police Academy, Pune, to sensitize on human trafficking issues. As to understand what is trafficking and as to understand the way in which we have to present the case and get success to prevent the victimization of women and children. And in that way, basing upon the feedback given by the trainers, the MHA Ministry for Home Affairs has passed Bhamati Balakrishnan, D.N. Chidambaram's secretary IAS. She has given a pass, privilege pass, to travel by air wherever I go for conducting this, presenting my programs. In that way, I have visited many academies, judicial academies and police academies, and combined training to the IAS, IPS judges at National Police Academy. And in that way, I have given 130 presentations on many concepts, subjects, topics, and the other models. That may be under POCSO Act. I got the opportunity to train all the POCSO judges of Orissa and at National Law College, Bhubaneswar, when the Act was introduced in the year 2012. How to understand the child psychology and how to present the child before the court, how to understand, assist the court to understand the saga of that victim. And I do develop the Hunt the Hunters project by me, and preventing red sandal smuggling. I have developed the models as to how to present and how to prove that this forest produce, to protect it and तो जो आज हमें ये मीटिंग में याद हुए हैं, तो मेन मीटिंग क्या है बोले तो हमारे बार काउंसिल के कंटेस्टेड कैंडिडेट आके हमारे रोजगार साहब आके हमारे को उनका व्यूज क्या है, उनका पास्ट क्या था, अब हमारे एडवोकेट कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उनके एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, और जिन्हें 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स जितने एडवोकेट्स है, तो हमें कैसे आदमी को चुनना है, कैसे आदमी को हमें वोट देना है, कैसे आदमी को हमें बार काउंसिल से मेंबरशिप लेना है, हमें सोचना है। तो सोचने को पहले हमें कैलिबरिटी, सिंसियरिटी, ये सब सोचते हुए हमारा वोट किसको डाले तो फायदा होगा, उनको सोचना है। मेरा मकसद क्या होगा, उनके बारे में सीनियर्स को मालूम होगा, तो जूनियर्स को भी बहुत दिनों को मालूम नहीं। तो मेरा 94 बैच मेरा एडवोकेट्स में आ रहे हमें, तो आई एम गॉट ए 30 ईयर्स स्टडी मेरा 3 साल तक मैं इससे मैं गाइड्स करूँ।
तो मैं 91 से 94 से एकेडमिक्स तो बुक्स पढ़ा था नहीं, तो पहले किताब था नहीं, आज के किताब से शुरू करा मेरा ला करियर में नहीं लाख रोजेदार हिसाब से मैंने मेरा क्रेडिट बुक्स पढ़ना शुरू करा है। तो वो उसमें इतना अच्छा लफ्ज़ लिखते थे, तो हमें न्यूली डिग्री पढ़ के बाहर आने के बाद वो उसमें तो हम है all of you. One thing I would like to say here, all the people are same, but one should be the unique. What will be the unique? According to their attributes, their characters, their situations, how he mold himself towards success. That's why you would like to stay here itself, you don't want to come here. Rozdar sir, simply a phone call is enough to all the whole state. The thing is that why he came here? Because of he would like to interact each and every people in the bars of Karnool. Am I right? Can I agree with this matter? If it is okay, please raise your hand, yes. If it is not okay, I don't want to accept anything. Please, thank you very much for your support. अस्सलामुअलैकुम सबको, स्टेट प्रोफेशनल सीनियर्स को और जूनियर्स को, सब साथियों को, सब जितने भी इधर आए हैं, सब एडवोकेट्स को और बहुत से सीनियर्स हैं, सब बात करने वाले हैं। मेरा इरादा ये है, सामने आए हैं हम, चलो सब मिलकर इनको अप्रिशिएट करना है और सपोर्ट करना है। ऐसा जितने भी लोग आते हैं, मुसलमान लोग, हमारे माइनॉरिटीज लोग, सबको हम लोग एक साथ मिलकर सपोर्ट करना है। आज मुझे देखने का मौका मिला और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से एक ही बात क्या है बोले तो हमारे को स्टेट बार काउंसिल में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और हमारे को क्या होना पूरे करके चीजें तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు గత ఎలక్షన్ హామీలో ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఒకటి, తర్వాత ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది అమౌంట్ ఎంత ఉందంటే పేద చాలా మంది పేదవాళ్ళు కూడా అది కట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు. దాన్ని ఏం అడిగినామంటే ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు ఎంతైతే ఉందో ఓసీ బీసీకి 750 రూపీస్, ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి 125 రూపీస్ చేయమని అడుగుతున్నాం. లేదంటే యూనిఫామ్ గా 500 రూపీస్ చేయమని అడుగుతున్నాం. అలాగే ఇంతకుముందు జూనియర్స్ 15,000 రూపాయలు బుక్స్ లోనే ఇచ్చేవాళ్ళు, అంటే మంత్లీ అది కూడా బుక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అది నెలకు 500 రూపాయలు క్యాష్ కట్టించాము. దాన్ని 25,000 చేసి ఎవరైతే 5 years లోపున్న జూనియర్స్, అది లాభం కూడా ఉన్నది, 5 years లోపున్న జూనియర్స్ కి ఆ బుక్ లో అమౌంట్ 15,000 నుంచి 25,000 వరకు అది ఎక్స్టెండ్ చేసి అది అందరికీ జూనియర్స్ తెలిసే విధంగా సార్ చేయాలని, అలాగే అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఖచ్చితంగా చేయాలని దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం అనేది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఎవరైతే 35 దాటిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ వెల్ఫేర్ ఫండ్ కట్టుకునే అవకాశం, అలాగే 35 years దాటిన వాళ్ళు వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 40 years వరకు అమెండ్మెంట్ చేసి దాన్ని చేయాలని కోరుతూ సార్ జూనియర్స్ తరఫున ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఈ इलेक्शन से पहले कर्नूल में एक मुस्लिम एसोसिएशन था, प्रायर टू 2012 ऐसा एसोसिएशन था, एक रिकॉर्ड एसोसिएशन था। वो भी कर्नूल का है तो ये एसोसिएशन मिला और मेरा एक सिस्टम था। बाद में कौशल साहब को रेगुलर 3 साल में एटलीस्ट 30 वोट्स फर्स्ट वोट्स से वोटिंग करते हैं। बाद में क्या हुआ तो मुझे साहब ने एलिवेट हो गए जीवन में। बाद में हमने एक सूटेबल रिप्रेजेंटेटिव ले मिले। आज खुशी का है तो रोजगार साहब एक अच्छे आदमी, एक नेक इंसान को मैं मानता हूँ। उसका मेरे गुजारिश क्या है तो तुम को भी फर्स्ट वोट दे रहा है, तुम्हारे 2 साल को एटलीस्ट सेकंड वोट तो रिक्वेस्ट करो। तो मतलब ये इलेक्शन हार्ड इलेक्शन है, हर आदमी के वोट एटलीस्ट यदि प्रिफरेंशियल वोट
तुम्हें जितने रहते आए तुम्हें सभी एक फर्स्ट वोट दिया तुम्हारे 2 साल को एटलीस्ट सेकंड और थर्ड वोट से यहाँ को 2 साल का रिप्रेजेंटेटिव बना को एक बार काउंसिल में कर दिया यही मैं गुजारिश है I'm very much thankful. All the way, whole day I was with my our other member, who is contesting for council election. As my friend was saying just now, Hanif sir, after Naushad Ali, there is a gap, I think I can say more than 10 years. More than 10 years here. No Muslim advocate is a member of the Bar Council. 18 years. 18 years. Correct to correction, 18 years. So it is the right opportunity for us to make such a right person to the bar council member. I request all of you, my friends, to cast first vote because he deserves first vote. As my friend Hanif said, second vote we can give, third vote we can give, third vote, but he deserves first vote. His credentials are like that. He is an international personality. I request all of you to give first vote to him. Our other members, Muslim advocates, all Muslim members are also there. We can give according to priority. But first vote, I request you once for all, again and again, to cast our first vote to gentleman. And to our beloved senior, Roshidar sir, who came from the long way. And I came to know that recently, I got the information that after 18 years, our Muslim candidate is going to contest in Bar Council election. So, we all know what are the situations we are facing and what are the difficulties we are facing through the community as well as whatever the practice we are doing in the local bars, what difficulties we are facing day by day, as well as practice subject matter, as well as high court matters. So we need a right person, like senior, we have to support him. So today we are gathered here to support our son.